ये है यूनिट एंड डायमेंशन का। तो इसमें पहले पी वाई क्यू देख लेते हैं। तो इसमें कि द एंगल 1 मिनट ऑफ द आर्क इन द रेडियन इन एल इक्वल टू, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/50 डिग्री, यानी 1/50 गुना पाई बाई 180, यानी 2.91 गुना 10⁻⁴ ऐड। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2.91 गुना 10⁻⁴ ऐड। फिर आता है द यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, तो यूनिट होता है थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर पर केल्विन। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नॉट कितना आता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इन SI यूनिट कितना होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 6.53 गुना 10⁻34 जूल सेकंड। नेक्स्ट है कि इन पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ द लेंथ मास एंड द टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली। तो द यूनिट ऑफ द फोर्स इन द सिस्टम कितना हो जाएगा? तो MLT -2 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर 0.1 सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ रहा है? 10⁻², 10⁻1 फिर 10⁻1 तो आ जाएगा 0.1 न्यूटन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 0.1 न्यूटन। फिर आता है कि स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ बार। मेन स्केल रीडिंग 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन। गिवन एट 1 mm ऑन द मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू द 4 डिवीजन फ्रॉम द सर्कुलर स्केल। द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि मेन स्केल रीडिंग MSR इक्वल टू 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल टू 52। तो LC इक्वल टू हो जाएगा PYN, जहाँ पिच जो है पिच ऑफ द स्क्रू है, एन जो है नंबर ऑफ द सर्कुलर डिवीजन है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। तो लिफ्ट काउंट हो जाएगा 1/4 mm, यानी लिफ्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm, तो हो जाएगा लिफ्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो लिफ्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज होगा 0.001 सेंटीमीटर। तो डायमीटर डी हो जाएगा MFR प्लस CFR गुना LC, यानी डी इक्वल टू 0.052 सेंटीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन डी 0.052 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि टाइम इंटरवल्स मेड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25, 1.24, 1.27, 1.1, 1.28। तो व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर्स ऑब्जर्वेशन? तो मेन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1.28/5, यानी 1.25 आ जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? परसेंटेज डेल्टा टी बाई टी गुना 4 इक्वल टू आ जाएगा 1.6%। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1.6%। फिर आता है कि स्क्रू गेज है द लिफ्ट काउंट ऑफ द 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ द स्क्रू ये कितना हो जाएगा? तो लिफ्ट काउंट जो है 0.01 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो है 50। तो पिच ऑफ द स्क्रू हो जाएगा 50 गुना 0.01 यानी 0.5 mm। आंसर होगा ऑप्शन बी 0.5 mm। नेक्स्ट है टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 9.99 mm माइनस 0.0099 mm। तो डिफरेंस बिटवीन 9.99 mm एंड 0.0099 mm कितना हो जाएगा? इसमें से अगर निकालें तो हो जाएगा 9.99 माइनस 0.0099 यानी 9.9801। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए 9.98 मीटर। तो हो जाएगा ऑप्शन ए 9.98 मीटर। नेक्स्ट है कि द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्फर्ड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो लिफ्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा n VFD इक्वल टू n-1 MFD। तो एक VFD इक्वल टू n-1/n MFD आ जाएगा। तो लिफ्ट काउंट हो जाएगा 1 MFD माइनस 1 VFD। तो 1 MFD माइनस n-1/n MFD, तो आ जाएगा 1/n MFD। तो लिफ्ट काउंट आ जाएगा 1/n गुना 1/n यानी 1/n सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा ऑप्शन सी 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए बॉल ऑफ टेल यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ लिफ्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। The main scale reading is 5 mm and the zero of the circular scale division conferred with 25 divisions of the reference level. If the screw gauge has a zero error of minus 0.004 सेंटीमीटर, तो करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा? तो जानते हैं कि लिफ्ट काउंट ऑफ द स्क्रू की तो एल इज इक्वल टू 0.0001 सेंटीमीटर, और मेन स्केल रीडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 mm यानी 0.5 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग 25 दिया हुआ है, तो जीरो रहेगा माइनस 0.004 सेंटीमीटर, यानी MFR प्लस BFR गुना LC माइनस जीरो इरर। ठीक है, जीरो इरर हमेशा सब्ट्रैक्टिंग होता है। तो 0.5 प्लस 25 गुना 0.001 माइनस 0.004, तो आएगा 0.529 सेंटीमीटर। दस डायमीटर ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा? 0.529 सेंटीमीटर। आंसर होगा क्या? आंसर होगा ऑप्शन डी 0.529 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटी A, B, C and D are measured with the percentage of 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated, P is equal to AQ B square CD by C by D %। तो परसेंटेज इन P कितना हो जाएगा? तो P हो जाएगा AQ B square by CD। तो ये तो सिंपल है, इसमें कितना आ जाएगा? 14%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है if the error in the measurement of the radius of the sphere is 2%, then the error in the determination of the volume कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम होता है V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, यानी डेल्टा V बाई V गुना 4 इक्वल 3 डेल्टा R बाई R गुना 4। तो डेल्टा R बाई R गुना 4 इक्वल 2%, तो डेल्टा V बाई V गुना 4 हो जाएगा कितना? 6%। तो यहाँ से आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन बी 6%।
अगला सवाल है कि द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द लेंथ आर 4% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी कितना हो जाएगा? तो जानते हैं कि रो इक्वल टू होता है एम बाई वी यानी एम बाई एल क्यू। तो डेल्टा रो बाई रो गुना 4 हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल गुना 4 यानी कितना आ जाएगा 13%। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 13%। फिर आता है द परसेंटेज error in the measurement of the mass and the speed are 2% and 3% respectively। तो error in the kinetic energy obtained by measuring the mass and the speed कितना हो जाएगा? तो k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर डेल्टा के बाई के इंटू 4 हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम गुना 4 प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी गुना 4। तो कितना आ जाएगा? डेल्टा के बाई के गुना 4 हो जाएगा 2% प्लस 2 गुना 3% यानी कितना हो जाएगा 8%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8%। अगला सवाल इन द वर्नियर कैलिपर n division of the vernier scale coincide with n minus 1 division of the main scale in which लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 mm। तो लिफ्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा? तो जानते हैं कि एन वी एफ डी इक्वल टू एन माइनस 1 एम एफ डी। तो वी एफ डी हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया, एम एफ डी हो गया मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वी एफ डी इक्वल टू एन माइनस 1 बाई एन एम एफ डी। तो लिफ्ट काउंट हो जाएगा 1 एम एफ डी माइनस 1 बी एफ डी। तो हो जाएगा कितना 1 बाई 10 एन सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या सी 1 बाई 10 एन। फिर आता है कि बॉडी वेट 22.42 ग्राम एंड एज ए मेजर वॉल्यूम ऑफ द 4.1 cc। द पर्पल एरिया इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द वॉल्यूम आर 0.01 ग्राम एंड 0.1 cc। देन द मैक्सिमम एरिया इन द डेंसिटी भी कितना हो जाएगा? तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, रो हो जाएगा एम बाई वी। तो डेल्टा रो बाई रो हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2%। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2%। अगला सवाल इफ द फोर्स एफिलेशन फॉर द टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द एनर्जी। तो फोर्स एफिलेशन टाइम का दिया हुआ है तो ई हो जाएगा एफ ऑफ ए। इसको सॉल्व करने का इस तरफ से भी कर सकते हैं लेकिन हमको ज़्यादा अच्छा है कि इसमें है जो हटा कर सॉल्व करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एम एल टू टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू के ए एल टी माइनस टू के बी और टी के सी। तो एम एल टू टी माइनस टू एम के एल के ए प्लस बी और टी माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सी बराबर 2। तो डायमेंशंस ऑफ द एनर्जी हो जाएगा एफ के 1 ए के 1 और टी का आ जाएगा 2। तो आंसर होगा ऑप्शन बी एफ ए टी 2। फिर आता है कि इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डोनट द एनर्जी एंड द ग्रेविटेशन ऑफ देन द ई बाई जी है द डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका? तो हम जानते हैं कि ई तो होता है एम एल टू टी माइनस टू, सही है, एम एल टू टी माइनस टू ये होता है और जी का होता है 132। यहाँ 132 इस प्रकार से 132 होता है, ठीक है जी का। तो कर देंगे डिवाइड आ जाएगा एम टू एल माइनस 1 टी 0। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रेस आर तो हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल टू द फोर्स बाय एरिया। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस होता है एम एल टी माइनस टू बाई एल स्क्वायर। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। फिर आता है ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए डायमेंशन ऑफ ए लेंथ दैट कैन बी फॉर्मड ऑफ द सी जी एन ए स्क्वायर 4 पाई नॉट इज। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बाई सी स्क्वायर जी ए स्क्वायर 4 पाई नॉट के रूट आ जाएगा, सही है। अगला सवाल है कि अब इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि एफ इक्वल टू ई स्क्वायर और 4 पाई नॉट के आर स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई नॉट के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एफ। अब पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ द आर एंड एफ तो ई स्क्वायर और 4 पाई नॉट हो जाएगा एम एल 3 टी माइनस 2। तो एफ इक्वल टू क्या होता है जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जी हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर। तो जी हो जाएगा एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2। तो यहाँ पे ना चेकिंग दी ऑप्शन बाई तो हो जाएगा एल माइनस 2 टी 2 और एल 6 टी माइनस 4 टी के हाफ। तो आ जाएगा कितना एल आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ द एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन इन द फंडामेंटल क्वांटिटी तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, एफ होता है एम एल टी माइनस 2 बाई एल यानी एम एल 0 टी माइनस 2। ई होता है एम एल 2 टी माइनस 2। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो ई हो जाएगा ई ए भी बी टी सी। फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ द होमोजेनिटी ई करेंगे तो कितना आ जाएगा एफ आ जाएगा ई भी माइनस 2 टी माइनस 2। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ई भी माइनस 2 टी माइनस 2। फिर आता है कि डायमेंशंस ऑफ द क्रिटिकल विस्कोसिटी वी सी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब एंड द कोएफिशिएंट एज ईटा एक्स रो बाय आर जेड where the eta rho and r the coefficient of the viscosity of the liquid, density of the liquid and radius of the tube respectively, and the value of the x, y and z are given as। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि बी सी इक्वल टू होता है ईटा एक्स रो बाई आर जेड। ईटा का हो जाएगा क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो का होता है एम एल माइनस 3। रेडियस ऑफ द ट्यूब का होता है एल का, आर का होता है लेंथ क्योंकि वो लेंथ है। क्रिटिकल वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वी इक्वल टू एल टी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको रख देंगे एल टी माइनस 1 एक्स बाई जेड करके ही सॉल्व करेंगे इसको भी, नहीं तो इसको है जो
एक और तरीके से कर सकते थे कि उसमें किसी को एक एलिमिनेट करके कर सकते थे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1 -1 -1। ठीक है। नेक्स्ट है कि द फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स इन द डायमेंशंस ऑफ द मास। कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं F इक्वल टू होता है ma, F इक्वल टू mv बाई टी, यानी m इक्वल टू होता है ft बाई v। तो यहाँ से आएगा fb -1, आंसर आएगा ऑप्शन डी fb -1 और टी। फिर आता है डायमेंशंस ऑफ दी 1 बाई म्यू नॉट ई नॉट कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी LT -1, वेलोसिटी है ये। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ द हाफ इन स्क्वायर, तो ये तो एनर्जी डेंसिटी होता है। तो एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी का होता है ml2 T-2। तो एक और नीचे में L2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ml -1 T-2, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। सही है। नेक्स्ट है कि इफ द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एज MA/LB/TC, देन द फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो सबका चेकिंग करना पड़ेगा। सही है। MA/LB/TC प्रेफर का चेक करेंगे, फोर्स बाई एरिया से, वेलोसिटी का करेंगे, फिर एक्सेलरेशन का करेंगे, फोर्स का करेंगे। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी होता है m0 LT -1, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन होता है LT -2, डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है LT -2 MLT -2, और डायमेंशंस ऑफ प्रेफर होता है ML -1 T-2। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, प्रेफर होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन है कि ये हो जाएगा प्रेफर, इसके लिए आंसर प्रेफर जाएगा। फिर आता है कि विच ऑफ द टू हैव द 5 फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द सेम डायमेंशन, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस का डायमेंशन सेम होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस का डायमेंशन है जो सेम हो जाता है। नेक्स्ट है कि डायमेंशंस ऑफ द रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द मास, लेंथ एंड टाइम एंड द करंट आई वुड बी, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V इक्वल टू IR। तो रेसिस्टेंस R होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यानी V बाई I W बाई QI। तो यहाँ से डायमेंशंस ऑफ R क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ वर्क और डायमेंशंस ऑफ चार्ज। तो यहाँ से आएगा ML2T-3 I -1, आंसर होगा ऑप्शन डी ML2T -3 I -2। फिर आता है कि द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एम टी इज गिवन बाय v इक्वल टू AT प्लस b बाई टी प्लस c, वेयर a b एंड c आर द कांस्टेंट। तो डायमेंशंस ऑफ ए में फिर कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि c का तो टाइम के इक्वल ही होगा। अब a का हो जाएगा LT -2 हो जाएगा। ठीक है। और c का तो टाइम के इक्वल ही हो जाएगा। फिर b का निकालना है, तो b का तो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, नीचे में एक टाइम भी है तो हो जाएगा l खाली, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द डायमेंशंस ऑफ द, तो प्लैंक कांस्टेंट L और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का भी ML2T-1 होता है। सही है। ML2T-1 होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ठीक है। हम जानते हैं कि जो h बाई आई, ठीक है, ई ये क्या है, तो h बाई आई इक्वल टू ई म्यू ई बाई ये हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये रिलेशन है जो कैसे आ रहा है ये देखना पड़ेगा, ई बाई म्यू। ठीक है। एल ये कहाँ से आ रहा है देखना पड़ेगा, ऐसे इस पर ऐसे कर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायमेंशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1/T, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। सही है। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, तो हो जाएगा ऑप्शन ए M-1 L3T-2 जाएगा। डायमेंशंस ऑफ जी कितना होता है 132, तो M-1 L3T-2 हो जाएगा। फिर आता है प्लैंक कांस्टेंट है द डायमेंशंस ऑफ, आंसर होगा ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस है जो सेम होता है। नेक्स्ट है कि ए पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्क एंड द एनर्जी। वर्क एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है जो सेम होता है। अगला सवाल, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, ऑप्शन ए ML2T-2 A-1, फाइव इक्वल टू क्या होता है बी ए। ठीक है। तो F इक्वल टू BIL, F इक्वल टू F बाई IL, तो फाइव इक्वल टू F बाई IL इंटू ए, तो डायमेंशन ऑफ फाइव हो जाएगा ML2T-2 A-1, ये आता है डायमेंशन ऑफ फाइव। नेक्स्ट है द फोर्स F ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग इन a मीडियम विद वेलोसिटी v गिवन बाय F इक्वल टू 6 पाई ईटा RB, तो डायमेंशन ऑफ ईटा कितना हो जाएगा, तो ईटा हो जाता है ML-1 T-1, आंसर होगा ऑप्शन डी ML-1 T-1। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम, तो टाइम का हो जाएगा L/R। नेक्स्ट है कि एन इक्वेशन गिवन बाय P प्लस A बाई V स्क्वायर इक्वल टू B थीटा बाई B, में P है जो प्रेशर है, B वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो A एंड B आर कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ द A कितना हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ P होता है डायमेंशंस ऑफ A बाई V के स्क्वायर, तो P हो जाएगा A बाई V के स्क्वायर, यानी A इक्वल टू P इंटू V के स्क्वायर, तो आ जाएगा ML5T-2, तो आंसर होगा ऑप्शन ए ML5T-2।
नेक्स्ट पिच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगला सवाल, टर्पेंटिन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब ऑफ द लेंथ एल एंड रेडियस आर। द प्रेफर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज पी। The viscosity of the oil is given by eta is equal to rho r square minus x square into 4vl, where v is the velocity of the oil at the distance x from the axis of the tube. तो डायमेंशंस ऑफ ईटा कितना हो जाएगा? तो ये देखो, ये जो है एल लेंथ ही है, फिर ऊपर में ये जो है पी क्या है, यहाँ पर पी जो है प्रेफर है, ठीक है, प्रेफर हो गया, वेलोसिटी और लेंथ हो गया। तो सबको यूनिट रखने का प्रेफर होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन। तो ईटा आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल स्क्वायर और एल टी माइनस वन, फिर एल तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। नेक्स्ट है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी पी गिवन बाय पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर बाय अल्फा इज द कांस्टेंट एंड टी द टाइम। तो कांस्टेंट अल्फा क्या हो जाएगा? तो पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर। सो अल्फा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेफ्ट। तो अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन है, तो अल्फा जो वन बाई टी स्क्वायर हो जाएगा टी के पावर माइनस टू। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, है डायमेंशन ऑफ टी के पावर माइनस टू। नेक्स्ट है कि पी रिप्रेजेंट द रेडिएशन प्रेफर, सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट एंड एस रिप्रेजेंट द रेडिएशन एनर्जी ऑफ ट्रैकिंग पर इन पर सेकंड। तो नॉन जीरो इंटीजर एक वन बाई फाइव दैट पी के पावर एक्स एक्स के पावर वाई सी के पावर जेड डायमेंशन लेफ आर। तो रेडिएशन प्रेफर पी इक्वल टू एम एल एफ वन टी माइनस टू होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है एल टी माइनस वन। तो एफ हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू बाई एल क्यू एल स्क्वायर टी, तो एम टी माइनस थ्री हो जाएगा। आप इसको इसी तरह से रख के सॉल्व करेंगे एक्स बाई जेड के फॉर्म में, तो आ जाएगा कितना? एक्स वन बाई माइनस वन जेड वन आ जाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक्स वन बाई माइनस वन जेड वन। नेक्स्ट है कि डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द परमिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस म्यूनट कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि डी बी इक्वल टू होता है म्यूनट ऑफ फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ आइडियल क्या है तो करंट एलिमेंट है। तो म्यूनट आएगा फोर पाई आर स्क्वायर डी बी बाई आइडियल साइन थीटा, तो आ जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन, ए माइनस टू। फिर आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कंपोनेंट के गिवन बाय द रिलेशन ऑफ द टाइप एफ इक्वल टू सी एम एक्स के बाई, वेयर सी द डायमेंशनलेस कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ द एक्स वन बाई कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू सी एम एक्स के बाई डायमेंशन ऑफ एफ, तो सी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एम इंटू डायमेंशन ऑफ के बाई। तो टी के माइनस वन हो जाएगा सी इंटू एम के एक्स और एम टी माइनस टू के बाई। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और माइनस टू बाई इक्वल टू माइनस वन, तो बाई इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स इक्वल टू और माइनस वन बाई टू। तो आंसर कितना जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, बाई इक्वल टू वन बाई टू। फिर आता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लिक्विड लेयर्स ऑफ द एरिया ए एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा जी गिवन बाय एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डी बाई जी डी, वेयर ईटा इज द कांस्टेंट कॉल्ड। तो एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डी बाई जी डी, ईटा हो जाएगा माइनस एफ बाई ए डी बाई जी डी। तो यहाँ पे ईटा कितना आ जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस वन आ जाएगा। सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। फिर आता है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दी प्रेफर कितना होता है? तो डायमेंशन फार्मूला प्रेफर होता है ऑप्शन सी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है, प्रेफर होता है फोर्स बाई एरिया। डायमेंशन फार्मूला ऑफ द टॉर्क कितना होता है? टॉर्क का जो होता है वर्क के जैसा ही होता है, एनर्जी के जैसा ही होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या? एम एल टू टी माइनस एम एल टू और ठीक है फोर्स एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 41 के। फिर आता है इफ एक्स इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर बाई एक्स द डिफरेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द किलोमीटर बाई टेज इन टाइम इन सेकंड, देन द यूनिट ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो एक्स इक्वल टू 80 प्लस बी टी के स्क्वायर दिया है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट ऑफ एक्स इक्वल टू यूनिट ऑफ बी टी के स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ बी हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी, तो इतना आ जाएगा। फिर आता है ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन है द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, आंसर होगा ऑप्शन डी, एंगुलर मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ द एनर्जी पॉइंट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू बाई एल क्यू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। फिर आता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एल टू टी माइनस वन, तो हो जाएगा आर क्रॉस पी, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। नेक्स्ट है सी एन आर डी नॉट कैपेसिटेंस एंड डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी आर कितना हो जाएगा? तो सी आर जो है वो टाइम के इक्वल ही है, सी आर एल वाई आर ये सब है जो टाइम ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी, ऑप्शन ए। यहाँ पर इसका पी वाई क्यों होता है? अब इसका देखेंगे एनसीईआरटी क्विकली देख लेते हैं, हालांकि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया है, फिर भी क्विकली है जो देख लेते हैं। तो आता है कि मेजरमेंट
Next, like measurement of any physical quantity involves the comparison with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted difference of standard called the unit. The result of a measurement of a physical quantity is specified by a number of numerical measure accompanied by a unit. Although the number of the physical quantity appears to be very large, we need only a limited number of the units for the expressing all the physical quantities since they are interrelated with one another. The units of the for the fundamental of the base quantity are called the fundamental or the base units. The units of all other physical quantity can be referred as the combinations of the base units. Such units obtained for the derived units are called as the derived units. A complete set of these units, both the base unit and the derived unit, is known as the system of the units. Prata international system of the unit. Tokata in the earlier times, we're using a different system for the unit of measurement. Three such systems, the FGF, FEF, and the MKF system, were known in extensively till recently. The base unit of length, mass, and time in this system were as follow. In the FGF system, there were centimeter, gram, and the second respectively. In the FPF system, they were foot, pound, and the second respectively. In the MKF system, they were at meter, kilogram, and second respectively. The system of units which is at present internationally accepted for the measurement is the system international the units abbreviated as the FI. The FI unit be the standard symbol of the units and abbreviation developed by the Bureau of the International Standard. इसके बाद कहता है in the 1921 were recently revised in the general component of the bait and the measure in the 2018. The film is now international usage in the scientific, technical, industrial, and the commercial work because FI units for your decimal system conversion between the system are quite simple and convenient. We shall follow the FI unit in this book. कहता है in the FI there are 7 base unit as in the table 1.1. Before the 7 base unit there are 2 more units that are defined for the plane angle d theta and the ratio of the arc df to the radius r and b solid angle d omega d ohm at the ratio of the intercepted area dA of the spherical surface. Discovered about the apex 4 at the center of the square of the radius r as shown in the figure 1.1a and b respectively. The unit of the plane angle is radian and with the symbol rad. Unit of the solid angle is the radian with the symbol of sir. Both these are the dimensionless quantities. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि डी थीटा होता है डी एस बाई आर और डी ठीक है ये होता है डी ए बाई आर स्क्वायर ऑफ टी रेडियन. तो डिस्क्रिप्शन फॉर द प्लेन एंगल डी थीटा एंड द फुलिड एंगल ठीक है डी फाई कर सकते हैं इसको. अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ डिफिनेशन जैसे लेंथ का होता है मीटर और सिंबल होता है एम. तो द मीटर symbol m is the unit of the length is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in the vacuum to be c is equal to 10 lakh when expressed in the unit of the meter per second, where the second defined in terms of the fusion frequency म्यू सी एफ फ्यूजन का फ्रीक्वेंसी. मास किलोग्राम होता है केजी. तो द किलोग्राम सिंबल केजी इज द यूनिट ऑफ द मास. इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड नंबरिकल वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट h to be 6.62 गुना 10 के पावर -34 when expressed in the unit of the joule second which is equal to the kg meter square per second where the meter and the second are defined in terms of the c and the frequency of the fusion. फिर आता है टाइम का सेकंड होता है और एफ होता है. द सेकंड सिंबल इज द यूनिट ऑफ टाइम. It is defined by taking the fixed numerical value of the fusion frequency, the unperturbed ground of state hyperfine transition frequency of the fusion 133 atom to be इतना when expressed in terms of the hertz which is equal to the second inverse. फिर आता है इलेक्ट्रिक एम्पियर होता है A. तो the ampere symbol is the unit of the electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge E to be 1.7 on the power 1 of 19 when expressed in the unit of C which is equal to the ampere second where the second is defined in the terms of the frequency of the fusion. फिर आता है thermodynamic temperature Kelvin. तो the Kelvin symbol K is the unit of the thermodynamic temperature. It is defined by the taking the fixed numerical value of the Boltzmann constant K to be 1.38 10 to the power -23 when expressed in the unit of the joule per Kelvin which is equal to the kilogram meter per second square per Kelvin where the kilogram meter and second are defined terms of the Hc and the frequency of the fusion. फिर आता है amount of substance mole. तो the mole symbol is the unit of the amount of substance. 1 mole contains exactly 6 गुना 10 के पावर 23 elementary entity. This number is fixed numerical value of the Avogadro constant Na and expressed in the unit mole and is called the Avogadro number. The amount of the substance symbol N of a system is a measure of the number of the specified elementary entity. An elementary entity may be an atom, molecule, or an ion, electron, or any other particle or specified group of the particles. फिर आता है luminous intensity. तो इसको आता है candela CD. तो the candela symbol CD is the unit of the luminous intensity in the given direction. It is defined by taking the fixed numerical value of the luminous frequency of the monochromatic radiation of the frequency 540 गुना 10 के पावर 12 हर्ट्ज kd to be 683 when expressed in the unit of the luminous intensity which is equal to ठीक है per watt luminous per watt which is equal to the CD FR per watt or the CD FR per kg meter or SQ where the kilogram meter and the second are defined in terms of the HC and the frequency of the cesium. अब यहाँ पर जैसे मिनट का हो गया तो मिनट का हो जाता है 50 सेकंड. आवर का होता है 3600 सेकंड. डे का होता है 86,400 सेकंड. ईयर का होता है 3.155 गुना 10 के पावर 5 सेकंड. डिग्री का होता है
1 डिग्री तो पाई बाई 80 रेड। लीटर का होता है 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। टन का होता है 10⁻³ kg। कैरेट का होता है 200 मिलीग्राम। बार का होता है 0.1 मिली पास्कल इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। क्यूरी का होता है 3.7 10⁻10 पर सेकंड। रोटियन का होता है 2.5 × 10⁻⁴ कूलम पर kg। क्विंटल का होता है 100 kg। बांध का होता है 100 FM के स्क्वायर इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। आर्क एयर का होता है 1 डैम स्क्वायर इक्वल टू 4 10⁻2 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर का होता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। और स्टैंडर्ड ऑफ एक प्रेशर होता है 1,01,325 पास्कल इक्वल टू 1.013 10⁻5 पास्कल। मैच करके तो हम तो पूछ देते हैं यहाँ पे पक्का कि note that when mole is used, the elementary entity must be specified. These entity may be atom, molecule, ions, electrons, other particles for the specified group of the such particle. We employ the unit for some physical quantity that can be derived from the 7 base unit. Some derived units in that of the SI unit are given in the table. Some SI derived units are given of special names, and some derived SI units are make use of the units and the special names and the 7 base unit. They are given in the appendix A6.2 and the A6.3 for your ready reference. Other units for the general use are given in table 1.2. Common SI prefix and the symbol for the multiple and the sum multiple are given in appendix A.2. General guidance using the symbols of the physical quantity, chemical elements, and nuclides are given in the appendix S1, and those for the F units and the some other units are given in appendix A8 for the guidance. उसके बाद फिर कहता है कि significant figures. So I discussed above, every measurement involves errors. Thus, the result of the measurement should be reported in a way that indicates the precision of the measurement. Normally, the reported result in the measurement is a number that includes all the digits and the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. The reliable digit plus the first uncertain digit are known as the significant digit or the significant figure. If we say the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 seconds, the digit 1 and 6 are reliable and uncertain, while the digits 2 is uncertain. The measured value has the 3 significant figure. The length of the object reported after measurement to be 287.5 cm has 4 significant figure, while the digit 287 are certain, while the digit 5 is uncertain. Clearly reporting the result of the measurement that includes the more digit than the significant digit is superfluous and also misleading, since it will also give a wrong idea about the precision of the measurement. फिर कहता है कि the rules for determining number of the significant figure can be understood from the following example. Significant figures indicate, as already mentioned, the precision of the measurement, which depends on the lift amount of the measuring instrument. A choice of the change of the different units does not change the number of the significant digits for the figure in the measurement. These important remarks make most of the following observation clear. For example, the length 2.308 cm has 4 significant figures, but in different units, the same value can be written as 0.02308 meter or 23.08 mm or 23.080 micrometer. All the numbers have the same number of the significant figure 2308, namely 4. फिर कहता है कि this show that the locations of the decimal point are of no consequence in determining the number of the significant figures. The example gives the following rules. All the non-zero digits are significant. All the zero between the two non-zero digits are insignificant, no matter where the decimal point is, if at all. If the number is less than 1, the zero on the right side of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. And in the 0.00208, the underlined zero are not significant because the terminal or the trailing zero in a number without a decimal point are not significant. Thus, the 123 meter, 1230 centimeter, 12300 mm has 3 significant figure. The trailing zero being not significant. However, you can also see the next observation. The trailing zero in a number with a decimal point are significant. So the number 3.500 or 0.06900 have the 4 significant figure each. फिर कहता है there can be some confusion regarding the trailing zero. Suppose a length is reported to be 4.1 meter. It is evident that zero here are meant to convey the precision of the measurement and are therefore significant. If these were not, it would be superfluous to write them explicitly. The reported measurement would have been 4.1 meter. Now suppose we change the units to 4.700 meter is equal to 420.0 centimeter is equal to 445 mm or 0.004700 kilometer. Since the last number had a trailing zero in number with no decimal, we would conclude erroneously from the observation above that number had 2 significant figure, while in the fact it had 4 significant figure, and the mere change in the unit cannot change the number of the significant figure. फिर कहता है कि to remove such ambiguities in the determining the number of the significant figure, the best way to report every measurement in the scientific notation in the power of 10. In this notation, every number is expressed as a गुना 4 power b, where a is a number between 1 to 10 and b is any positive or
negative exponent of 10. In order to get an approximate idea of the number, we may round off the number a to 1 for a less than or equal to 5 and to the 10 for 5a for 10. The number can be expressed approximately at 10 to the power b, in which the exponent of b is called the magnitude of the order of the magnitude of the physical quantity. When only an estimate is required, the quantity is of the order of the 10 to the power b. For example, the diameter of the earth is 1.2 to the power 5 meter, is of the order of the 10 to the power 5 meter with the order of the magnitude 5. The diameter of the hydrogen atom 1.06 to the power minus 10 meter is order of the 10 to the power minus 10 meter with the magnitude of the 10 to the minus 10. Thus, the diameter of the earth is 17 orders of the magnitude larger than the hydrogen atom. It is often customary to write the decimal after the first digit. Now the confusion mentioned in the above disappears. The 4.1 meter यानी 4.1 गुना 10 power 2 centimeter तो 4.1 गुना 10 power 3 mm यानी 4.1 गुना 10 power minus 10 kilometer. The power of the 10 is irrelevant to the denomination of the student figure. However, all zeros appearing in the base number either significant notation are significant. Each number in this case has a 4 significant figure. फिर कहता है कि thus in the scientific notation no confusion arises out of trailing zero in the base number alpha. These are always significant. The scientific notation is ideal for reporting measurement, but if this is not adopted be with the rules adopted in the preceding example. For a number greater than 1 without any decimal, the trailing zero are not significant. For a number with a decimal, the trailing zero are significant. The digit 0 conventionally put on the left of a decimal or a number less than 1, like the 0.1250, is never significant. However, the 0 at the end of the first number are significant in the measurement. The multiplying or dividing factors, which are neither rounded numbers nor numbers representing the measured value, are exact and have the infinite number of the significant digits. For example, in r equal to d by 2 or f equal to 2 pi r, the factor 2 is an exact number and it can be written as 2.0, 2.00 or 2.40 as required. Similarly, t is equal to t of small t by n is an exact number. The rules for the arithmetic operation with the significant figure to the real topic calculation involving the approximate measured value of the quantity. Values with limited number of the significant figure must reflect the uncertainty in the original measured value. It cannot be more accurate than the original measured values themselves on which the reality is based. In general, the final result should not have the more significant figure than the original data from which it was obtained. Thus, if the mass of an object is measured to be say 4.237 and its volume is measured to be 2.51 centimeter cube, then its density by the arithmetic division is 1.6 gram per centimeter up to the 11 decimal places. It would be clearly absurd and irrelevant to record such calculated value of the density to such a precision when the measurement on which the value is based have much less precision. The following rules for the arithmetic operation with significant figure ensure that the final result of the calculation is shown with the precision that is consistent with the precision of the input measured value. फिर इसके बाद कहता है कि in the multiplication or the division, the final result should retain as many significant figure as there in the original number with the least significant figure. Thus, in the example, density should be reported in a 3 significant figure. तो डेंसिटी मान लो कि भाग करें 4.237, इसमें 2.51 है, तो इसमें कितना था, लिफ्ट में कितना था 3, तो इसमें भी 3 आ जाएगा. Similarly, if the speed of light is gained by 3.008 meter per second and 1 year में 345.25 days होता है 3.15 गुना 10 सेकंड 5 significant figure, ठीक है. The light year is 9.47 गुना 15 मीटर, ठीक है. 9.47 गुना 15 मीटर, तो इसमें कितना आ जाएगा 3 significant figure, क्योंकि इसमें कर रहे थे 3 तो इसमें भी 3 आ जाएगा. In addition or multiplication, the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places. For example, the sum of the number 436.32 to 227.2 and 0.301 gram by the mere arithmetic addition is 663.821 gram, but the least precise measurement 227.2 gram is correct to only one decimal place. The final result should therefore be rounded off to 663.8 gram. Similarly, the difference in the length can be expressed as 0.307 minus 0.304 is equal to 0.003 meter and 10 to the 4 minus 10 meter. Note that we should not use the rule applicable for the multiplication and division and write the 654 gram as the result in the example of the addition and the 3.00 to the 4 minus 10 example of subtraction. They do not convey the precision of the measurement properly. For addition and the subtraction, the rule is in terms of the decimal places. The rounding of the uncertain digits to the number of the computation with the approximate number which contain more than one uncertain digit should be rounded off. The rules of rounding of number to the appropriate significant figure obvious in most cases. A number 2.146
rounded off to the three significant figure is 1.15. While the number 1.143 would be 1.14. The rule by the convention is that the preceding digit divided by the 1. If the insignificant figure digit to be dropped, the underlying digit in this case is more than 5 and the left unchanged if the latter is less than 5. But what if the number is 2.145 in the which the insignificant digit is 5? Here the convention is that if the preceding digit is even, the insignificant digit is simply dropped, and if it is odd, the preceding digit is raised by 1. फिर कहता है कि in the number 2.145 dash rounded off to the three significant figure becomes 1.14. On the other hand, the number 2.135 dash rounded off to the three significant figure becomes 1.14 since the preceding digit is odd. अब इसका आ गया कि in any involved or complex multi-step calculation, you should retain in intermediate step one digit more than the significant digits and round off to the proper significant figure at the end of the calculation. Similarly, a number known to be within many significant figures such as the 1.99 to the power 8 meter per second for the speed of the light in the vacuum is rounded off to an approximate value of 3 to the power 8 meter per second, which is often employed in the computation. Finally, remember that exact number that appear in the formula like t 2 pi in the t is equal to 2 pi root over L by G have a large infinite number of this significant figure. The value of the pi 3.14 is known to be large number of the significant figure. You may take the value of the 3.142 or 3.14 for the pi with a limited number of the significant figure adequate in the specific case. यहाँ पर each side of the cube is measured to be 7.203 meter. तो what are the total surface area and the volume of the cube to be appropriate significant figure. तो number of the significant figure in the measured length हो जाएगा 4. तो calculated area and the volume should therefore be rounded off to 4 significant figure. तो surface area of the cube हो जाएगा 6 गुना 7.203 मीटर के स्क्वायर आएगा 311.3 मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना आ जाएगा 323.7 मीटर क्यूब. अगला सवाल कि 5.1 program of the substance occupy 1.2 centimeter cube express density by the keeping the significant figure in the view. तो डेंसिटी होता है 5.14 by 1.2 यानी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब इसमें क्योंकि 2 से था तो 2 ही significant figure होंगे. रहता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग the uncertainty even in the results of the arithmetic calculation. The rules for determining the uncertainty or the error in the number a measured quantity in the arithmetic operation can be understood from the following examples. If the length and the breadth of a thin rectangular sheet are measured using a meter scale of 15.2 cm and 10.1 cm respectively, there are three significant figures in each measurement. It means that the length may be written as L is equal to 15.2 plus minus 0.1 cm or 15.2 plus minus 0.6%. Similarly, the breadth B may be written as B is equal to 10.1 plus minus 0.1 centimeter or 10.1 centimeter plus minus 0.1%. Then the error in the product of the two or more experimental value using the combinations of the error will be 1 will be equal to 153.52 or plus minus 1.6% and 153.62 plus minus 2.6 centimeter square. This led to the quarter the final result is L 154 plus minus 3 centimeter square. Here 3 centimeter square is the uncertainty or error in the estimation of the area of the rectangular sheet. आगे बढ़ जाते हैं तो आगे है कि if a set of the experimental data is referred to the n significant figure, the result obtained by the combining the data will also be valid to the n significant figure. However, if the data is subtracted, the number of the significant figure can be reduced. For example, 12.9 minus 7.06 gram, both ascribed to the three significant figure, cannot properly be evaluated as 5.84 but only as 5.8 gram, as uncertainty in the subtraction or addition combined in a different fashion. A smallest number of the different places rather than the number of the significant figure, any of the number added or subtracted. आगे है the relative error in of a value of a number subscribed to the figure depends on the not on only on n but also on the number itself. For example, the accuracy in the measurement of the mass 1.02 gram plus minus 0.01 gram, whereas another measurement 9.89 is also accurate to the plus minus 0.01 gram. The relative error in the 1.02 gram is कितना आ जाएगा 1%. Similarly, the relative error in the 9.989 gram हो जाएगा plus minus 0.1%. Finally, remember that intermediate result in the multi-step computation should be calculated to one more significant figures in the every measurement than the number of the digits in the least precise measurement. This should be justified by the data and then the arithmetic operation may be carried out. फिर आता है कि otherwise rounding off error can build up. For example, the reciprocal of the 9.58 calculated after rounding off to the same number of the significant figure is 0.104, but the reciprocal of 0.104 calculated to the three significant figure is 9.52. However, if we had written 1 by 9.58 equal to 0.1044, then take the reciprocal of the three significant figure, we would have returned the original value of the 9.58. This example justifies the idea to return one more extra digit
then the number of the D8 in the left V5 measurement, and in the intermediate steps of the complex multi-step calculation in order to avoid the additional error in the process of rounding of the number. अब इसका आगे पूरा dimensions of the physical quantity. So the nature of the physical quantity is described by its dimension. All the physical quantity represented by the derived units can be expressed in terms of the some combinations of the seven fundamental or the base quantity. We shall call the base quantity as the given dimension of the physical world, which are denoted by the square bracket. Thus the length has the dimension of L, mass m, and the time t. Electric current होता है एम्पियर, थर्मोडायनामिक होता है टेम्परेचर का K, और luminous intensity का होता है CD, and the amount of substance का होता है mole. The dimensions of a physical quantity are the power or the exponent to which the base quantity are raised to represent that quantity. Note that using the square brackets around a quantity means that we are dealing with the dimensions of the quantity. In the mechanics, all physical quantity can be written in terms of the dimension L, M, and T. For example, in the volume occupied by an object is expressed as the product of the length, breadth, and the height as the three length. Hence, the dimensions of volume is LQ हो जाएगा. As the volume is independent of the mass and the time, it is said to possess the zero dimension in the mass M0, zero dimension in the time T0, and the three dimension in the length. फिर इसके बाद कहता है कि similarly force by the product of the mass and the acceleration can be expressed as force equal to mass into acceleration, यानी mass गुना length by time के square. तो dimensions of the m force for the mlt के ml by t के square यानी mlt minus 2. Thus the force by the one dimension in mass, one dimension in the length, and the minus two dimension in the time. The dimensions in all other base quantity are zero. Note that in this type of representation, the magnitudes are not considered. It is a quality of the type of the physical quantity that enters thus a change in the velocity, initial velocity, every velocity, final velocity, and the speed are all equivalent in this context. Since all these quantity can be expressed at length by time, their dimensions are L by T or the LT minus 1. फिर आता है dimension formula and the dimensional equation. तो कहता है कि the expression which show how and which of the base quantity represent the dimension of a physical quantity called the dimensional formula of the given physical quantity. For example, the dimensional formula of the volume is m0 L3 T0, and that of the speed or the velocity is m0 Lt minus 1. Similarly, m0 Lt minus 2 is the dimensional formula of the acceleration. ml minus 3 T0 is dimension of the mass density. An equation obtained by equating a physical quantity with the dimension formula is called the dimensional equation of the physical quantity. The three dimensional equations are the equation which represents the dimension of a physical quantity in terms of the base quantity. For example, the dimension equations of the volume, speed, and the force and the mass density may be expressed as B is equal to m0 L3 T0, B is equal to m0 Lt minus 1, F is equal to ml T minus 2, or rho is equal to ml minus 3 T0. फिर कहता है कि dimensional equation can be obtained from the equation representing the relation between the physical quantity, the dimensional formula of a line number, and the wide variety of the physical quantity derived from the equation representing the relationship among other physical quantity expressed in terms of the base quantity are given in the. उसके बाद फिर कहता है dimensional analysis and its application. So the recognition of the concept of the dimension which guide in the description for the physical behavior is of the basic importance, as only those physical quantity can be added or subtracted which have the same dimension. A true understanding of the dimensional analysis helps us in deducing the certain relation among different physical quantity and checking the derivation, accuracy, and the dimensional consistency of the homogeneity of the various mathematical expression. When magnitudes of two or more physical quantity are multiplied, their units should be treated as in the same manner as the ordinary algebraic formulas. We can cancel identical units in the numerator and the denominator. The same is true for the dimensions of a physical quantity. Similarly, physical quantity represented by the symbol on both sides of a mathematical equation must have the same dimension. फिर आता है checking the dimension consistency of the equation. So the magnitude of the physical quantity may be added together or subtracted from the one another once they have the same dimension. In other words, we can add or subtract similar physical quantity. Thus, velocity cannot be added to force, or electric current cannot be subtracted from the thermodynamic temperature. This simple principle, called the principle of the homogeneity of the dimension in an equation, is extremely useful in checking the correctness of the equation. If the dimensions of all the terms are not same, the equation is wrong. Hence, if we derive an expression for the length of the distance an object, regardless of the symbol appearing in the ordinary mathematical relation, when all the individual dimensions are simplified, the remaining dimension must be that of the length. Similarly, if we derive an equation of the speed, the dimensions on both the sides of the equation, when simplified, must be of the length, or the LT minus 1. Dimensions are customarily used as a preliminary test for of the consistency of an equation when there is some doubt about the correctness of the equation. However, the dimension consistency does not guarantee correct equation. It is uncertain to the extent of the dimensionless quantity or the function. The arguments of the special functions such as the trigonometric, logarithmic, exponential function must be dimensionless. A pure number ratio of the similar physical quantities such as the angle
at the ratio length by length, refractive index by the ratio of speed of light in the vacuum by speed of light in the medium, etc. No dimension. Now we can test the dimensional consistency of the homogeneity of the equation x is equal to x naught plus b naught t plus half at square for the distance x traveled by a particle or the body in the time t which starts from the position x naught with an initial velocity b naught at the time t equal 0 and a uniform acceleration la along the directions of the motion. The dimension of each term may be written as x is equal to l, x naught is equal to l, b naught is equal to lt minus 1 equal to l, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना एल के जैसा, क्योंकि ये है जो लेंथी है. As each term on the right hand side of this equation has the same dimension, namely that of the length, which is same as the dimensions of the left hand side of the equation. Hence, this equation is dimensionally correct equation. But it may be noted that a test of the consistency of the dimension tells us no more and no less than a test of the consistency of the unit, but has the advantage that we need not commit ourselves to a particular choice of the unit, and we need not worry about the conversion among the multiples and the sum multiples of the unit. It may be borne in the mind that if an equation fails this consistency test, it is proved wrong, but if it passes, it is not proved wrong, right? Therefore, dimensionally correct equation need not be actually an exact correct equation, but a dimensionally wrong, incorrect equation or the inconsistent equation must be wrong. अब यहाँ पर देखो let us consider equation half m square equal to mgh, where m is the mass of the body, v its velocity, g the acceleration due to the gravity, and h is the height. तो check whether the equation is dimensionally correct. तो यहाँ पर आता है dimension of the LHF are m l t minus 1 के स्क्वायर यानी m l 2 t minus 2 यानी m l 2 t minus 2 हो जाता है. अब यहाँ से निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ द RHF हो जाएगा m l t minus 2 और l तो आ जाएगा m l 2 t minus 2. Dimensions of the LHF and RHF are the same and hence the equation is dimensionally correct. अगला क्वेश्चन की द एफआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल kg meter square per second square and that of the speed v is meter per second and of acceleration a is meter per second square. Which of the following formula of kinetic energy given below can you find out on the basis of dimensional arguments m of stands for. तो है कि every correct formula or the equation must have the same dimension on both sides of the equation. Also, only quantity with the same physical dimension can be added or subtracted. Dimensions of the quantity on the right side are ml2 l3 t minus 3, ml2 t minus 2 for the b and ml t minus 2 for the c. The quantity on the right side has no proper dimension since the two quantities of the different dimension have been added. Since the kinetic energy K has a dimension of ml2 t minus 2, formula F and are ruled out. Note that dimension arguments cannot tell which of the two, B or D, is the correct formula. For this, one must turn to the actual definition of the kinetic energy. The correct formula for the kinetic energy given by the B यानी आ जाएगा हाफ एम स्क्वायर. अगला है कि deducing the relation among the physical quantity. The method of dimensions can sometimes be used to deduce the relation among the physical quantity. For this, we should know the dependence of the physical quantity on the quantity up to the three physical quantity or the linear independent variables and consider it as a product of type of the dependence. Let us take an example. We consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the actions of the force of the gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass of the bob, and the oscillation due to gravity. Derive an expression for this time period using the method of redimension. So the dependence of the time period t on the quantity L, G and M as the product may be written as t is equal to k Lx G by mz, where k is dimensionless constant, x and by z are the exponent. By considering dimensions on both sides, we have L0 M0 t1 is equal to L1 x L t minus 2 y or m1 z. So Lx plus y t minus 2 y or mz. On equating the dimensions on both sides, we have x plus y equal to 0, minus 2 y equal to 1 and z equal to 0. So that x equal to half, y equal to minus 1 by 2, z equal to 0. Then t is equal to k L के पावर n by 2, g का पावर minus 1 by 2 और t is equal to k root over L by g. फिर कहता है कि note that the value of the constant k cannot be obtained by the method of the dimensions. Here it does not matter if the sum number multiply the right side of this formula because that does not affect its dimension. So actually k is equal to 2 pi, so that t is equal to 2 pi root over L by g. Dimensional analysis is very useful in reducing the relation among the interdependent physical quantity. However, dimensional constant cannot be obtained by this method. The method of dimensions can only test the dimensional validity but not the exact relationship between the physical quantity in an equation. It does not distinguish between the physical quantity having the same dimension. फिर आता है कि a number of the उसके बाद फिर इसका summary है. तो summary में इसका कहता है कि physics is a quantity science based on the measurement of the physical quantity. Certain physical quantity have the chosen as fundamental or the base quantity such as the length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and the luminous intensity. Each base quantity defined in terms of the certain basic arbitrary chosen but properly of standardized reference of standard
called the unit such as the meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, mole, and the candela. The unit of the fundamental or the base quantity are called as the fundamental or the base units. Other physical quantity derived from the base quantity can be expressed as a combination of the base of units and called the derived unit. A complete set of the unit, both fundamental and derived, is a system of the unit. The international system of unit based on the 7 base unit independent, internationally accepted units and is widely used throughout the world. The SI units are used in all physical measurement for both the base quantity and the SI and the derived quantity obtained from them. Certain derived units are expressed by the exponent of the SI unit with a special name such as the joule, Newton, watt, etc. The SI unit have the well-defined and internationally accepted unit symbols such as meter, kg, second, ampere, or Newton. Physical measurements are usually expressed for the small and large quantity in the scientific notation with power 10. Scientific notation and the prefix are used to simplify the measurements and the notation. The chemical computation giving indication to the precision of the number. Here are certain general rules and the guidelines must be followed to using the notation for the physical quantity and the standard symbols for the SI unit. Some other units and SI prefixes for expressing the properly to the physical quantity and the measurement. और उसके बाद फिर कहता है कि in computing and physical quantity, the units for the derived quantity involved in the relationship are treated as though they have algebraic quantity until the derived units are obtained. In measured and the computed quantity, proper significant figures only should be retained. Rules for determining the number of the significant figures carrying out arithmetic operation with them and rounding of the uncertain dates must be followed. Dimensions of the base quantity and the combinations of these dimensions describe the nature of the physical quantity. Dimensional analysis can be used to check the dimensional consistency of the equation, introducing the relation among the physical quantity. A dimensionally inconsistent equation need not be actually an exact equation, but a dimensionally wrong or the inconsistent equation must be wrong. तो अब इसके बाद इसका हम है जो एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं. तो एक्सरसाइज में है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्ट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दी, तो 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁶ मीटर क्यूब. फिर the surface area of the solid cylinder of the radius 2 cm and height 10 cm equal to the, तो हो जाएगा F इक्वल टू होता है 2 पाई r प्लस h, तो हो जाएगा कितना 1.5 गुना 10⁻4 मीटर स्क्वायर. फिर आता है व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ द 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ठीक है 5 मीटर आ जाएगा. फिर उसके बाद आता है कि रेडिएटिव डेंसिटी ऑफ द लीड 11.3, डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 11.3 kg/cm क्यूब, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 10⁻³ kg/मीटर क्यूब, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 11.3 गुना 10⁻³ kg/मीटर क्यूब. अब इसका आगे कि फिल इन द ब्लैंक बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ नीट, तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कितना आता है, यह आता है 10⁻7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 मीटर इक्वल टू आता है 1.017 गुना 10⁻⁻15 लाइट ईयर. 3 कितना आ जाएगा इसका किलोमीटर पर आवर में, तो इसका आ जाएगा 3.8 गुना 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर 3 मीटर पर स्क्वायर में. और 6.7 सेंटीमीटर वाले यूनिट में करेंगे तो आएगा 6.7 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड -2 और g-1. अगला क्वेश्चन, कैलोरी इज यूनिट ऑफ द heat or energy and it equals 4.2 joule when 1 joule equal to 1 kg meter square per second square. Suppose we imply system of the unit when the unit of the mass equal alpha kg, the unit of the length equals beta kg, the unit of the time is gamma second, so that the calorie has magnitude of 4.2, alpha के power -1, beta के power -2 and gamma के power 2 in terms of the new units. तो 1 calorie equal to 4.2 इतना न्यू यूनिट्स में अल्फा kg हो जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 बाई अल्फा के पावर -1, एक 1 बाई बीटा यानी बीटा का पावर -1 और 1 मीटर स्क्वायर की बीटा -2, तो 1 सेकंड हो जाएगा 1 बाई गामा यानी गामा का पावर -1, 1 सेकंड स्क्वायर गामा का पावर -2, 1 सेकंड -2 इक्वल टू गामा का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4.2 अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -2 और गामा का पावर 2. अगला है कि explain this statement clearly. तो इसका आंसर है the given statement is true because the dimension of quantity may be large or the small in compared to the sum of standard difference. For example, the coefficient of the friction is dimensionless, but the coefficient of the sliding friction is greater than the coefficient of the rolling friction, but less than the static friction. An atom is very small object in compared to the soccer ball. A jet plane moves with a speed greater than that of the bicycle. The mass of the Jupiter is very large compared to the mass of the cricket ball. The air inside this room contains a large number of the molecules as compared to that present in the geometry box. A proton is more massive than an electron, or speed of the sound is less than the speed of the light. फिर कहता है कि new unit of the length is chosen such that the speed of the light in the vacuum is unity. What is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit if the light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? तो speed distance between the sun and earth हो जाएगा speed of light गुना time taken by the light to cover the distance. तो given that the new unit speed of light होता है 1 मिनट, टाइम टेकन t इक्वल टू होता है 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड, तो डिस्टेंस बिटवीन सन अर्थ हो जाएगा 1 गुना 500 सेकंड यानी 500 मिनट हो जाएगा. अगला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड डिवाइस फॉर मेजरिंग द लेंथ. ए वर्नियर कैलिपर विद
20 deviation on the sliding scale. A screw gauge of pitch 1 mm and the 4 deviations on the focal scale. An optical instrument that can measure the length to within the wavelength of the light. The device with minimum count is the most suitable to measure the length. Lift count of the Banner cable 1 of standard deviation minus 1 Banner scale deviation. तो 1 minus 10 by 10 यानी कितना 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो लिफ्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन यानी 1/1000 यानी 0.001 सेंटीमीटर. तो लिफ्ट काउंट ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस हो जाएगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर यानी 0.00001 सेंटीमीटर. Hence it can be inferred that in the optical instrument is the most suitable device to measure the length. आगे बढ़ जाते हैं. तो आगे है कि student measures the thickness of a human hair by looking at it through the microscope of a saw. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of the view of the microscope is 3.5 mm. तो what is the estimate on the thickness of the hair? तो magnification of microscope आ जाएगा 100. Average width of the hair on the field of view of microscope आ जाएगा 3.5 mm. तो actual thickness of hair आ जाएगा 3.5 by 100 यानी कि 0.035 mm आ जाएगा. फिर आता है आंसर द फॉलोइंग. तो इसका आंसर है कि wrap the thread on uniform rod, a smooth rod in such a way that the coils the formed are very close to each other. Measure the length of the rod using a meter scale. The diameter of the thread given by the different diameter होता है length of thread by number of turns. It is not possible to increase the accuracy of a screw gauge by increasing the number of the division of the focal scale. Increasing the number of division on the focal scale will increase its accuracy to a certain extent only. A set of 4 measurement is more reliable than a set of 5 measurement because random errors involved in the former are very less compared to the latter. Rather, the photograph of a house occupies an area of the 1.575 cm square or on a 35 mm slide. The slide is projected onto the screen and the area of the house on the screen is 1.5 mm square. तो what is the linear magnification of the projector screen arrangement? The area of the house 1.15 cm square. Area of the image of the house format on screen हो जाएगा 1.5 गुना 4/4. Aerial magnification हो जाएगा area of object by area of image by area of object यानी 1.5 by 1.5 गुना 4/4. तो लिनियर मैग्निफिकेशन होगा ml इक्वल टू रूट ओवर एम है. तो कितना आ जाएगा 94.1 mm 94.11. Next are the given quantity 0.007 meter square. If the number is less than 1, then all the 0 on the right side of the decimal point but left to the percentage are insignificant. This means that here 2 0 after decimal are not significant, hence only 7 is significant in this quantity. The given quantity is 2.644 1 to the 4 24 kg and the power of any element to the decimal are significant, hence all the digits 246 are हो जाएगा significant. अब इसमें क्या है तो इसमें 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो फॉर ए नंबर ऑफ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, हेंस द बिफोर 2 3 7 एंड 0 द अपीयर फ्रॉम द आफ्टर डेसिमल इज ए सिग्निफिकेंट फिगर. तो इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3 4. तो इसमें क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा. फिर आता है 6.320. तो इसमें भी कितना आएगा ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, हेंस 4 डिजिट है जो इसमें अपीयरिंग डिजिट सिग्निफिकेंट हुआ. तो 1 2 3 4 आ जाएगा. द गिवन क्वांटिटी 6.032 न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो ऑल जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. इसमें भी 4 जाएंगे. फिर आता है गिवन क्वांटिटी इसमें भी है जो 4 जाएगा. इफ द नंबर इज लेस देन 1 then the zero on the right of the decimal point but to the left of the first digit are insignificant. Hence all the 3 0 appearing before 6 are not significant figure. All 0 between the two non-zero digits are always significant. Hence the remaining 4 digits का हो जाएगा significant figure हो जाएगा. फिर आता है कि the length, breadth and thickness of the rectangular sheet of the metal are 4.234 meter, 1.005 meter, 2.01 centimeter. तो give the area and volume of the sheet to correct significant figure. तो लेंथ दिया हुआ इतना, ब्रेथ दिया हुआ इतना, हाइट दिया हुआ इतना. तो सरफेस फीट होगा 2L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल. तो कितना आ जाएगा 88.12 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे वॉल्यूम करेंगे तो एल बी एच आएगा. तो 0.0855 मीटर क्यूब आ जाएगा. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फीट होगा 8 5 एंड 5. आगे बढ़िया. The mass of a box measured by the Grosser balance with 2.300 kg. 2 gold pieces of the mass 20.15 and 20.17 are added to the box. तो भाटी total mass of the box or the difference of the mass of the two pieces correct to the significant figure. तो mass of the Grosser box होगा 2.3 और mass of the gold piece होगा 20.15 यानी 0.02015 kg. Mass of the gold piece 2 हो जाएगा 20.17 यानी 0.02017 kg. टोटल मास ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा 2.3402 kg. तो डिफरेंस इन द मास हो जाएगा 20.17 यानी 0.02 ग्राम हो जाएगा. ठीक है. तो इन द सबट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटन एज मेनी डेसिमल प्लेस देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेज. अगला है इन द फेमस relation in the physics relating moving mass m to the weight of mass m naught of a particle in the term of its speed v and the light speed. This relation ठीक है. तो we write m is equal to m naught 1 minus b by b के स्क्वायर का रूट. तो गिवन द रिलेशन m is equal to m naught 1 minus b के स्क्वायर का रूट. डायमेंशन ऑफ m हो जाएगा m1 l0 t0. डायमेंशन ऑफ m naught हो जाएगा m1 l0 t0
बी हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे करेंगे डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा एम जीरो एल टू टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ सी हो जाएगा एम जीरो एल टी माइनस वन. So the given formula will be absolutely correct only when the dimensions of LHF is the same as the dimensions of RHF. This is only possible when the factor 1 minus b square का root is dimensionless and 1 minus b square is dimensionless. This is only possible if b square divided by c square. Hence the correct definition is m is equal to m naught 1 minus b square by c square का root. फिर आता है the unit of the length convenient on the atomic scale is given as the angstrom and it denoted as 1 angstrom equal to 10 power minus 10 meter. The size of the hydrogen atom is about 0.5 angstrom and what is the atomic volume in the 1 meter cube and the mole of the hydrogen atom. तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी 0.5 गुना 10 मीटर. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ से निकालेंगे तो 0.5 to 4 गुना 30 मीटर क्यू. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है 6.023 गुना 23 हाइड्रोजन एटम, तो आएगा 3.1 गुना 10 पर मीटर क्यू फॉर मीटर क्यू. नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 लीटर. What is the ratio of the molar volume to the atomic volume of a 1 mole of the hydrogen? So ratio of the hydrogen atom R is equal to 0.5 angstrom and 0.5 गुना 10 मीटर. Volume of the hydrogen atom 4/3 pi r cube, तो आएगा 0.5 to 4 गुना 10 मीटर क्यूब. Now the 1 mole of hydrogen atom होता है 6.023 गुना 23 हाइड्रोजन एटम, तो भी ये हो जाएगा 6.023 गुना 23 गुना 0.5 to 4 गुना 10 तो 3.16 गुना 10 आ जाएगा. तो भी हम हो जाएगा 22.4 यानी 22.4 गुना 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 7.0 गुना 4. अगला सवाल, एक्सप्लेन दिस कॉमनली ऑब्जर्वेशन इफ यू लुक एट आउट द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑफ विच. ठीक है, तो लाइन ऑफ द फाइट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फाइट. When the object near a stationary object such as a tree of the while sitting in a moving train, they appear to move rapidly in the opposite direction because the line of sight changes rapidly. On the other hand, different objects such as a tree of stars etc. appear stationary because of the large distance. As a result, line of sight does not change its direction rapidly. आगे बढ़ाते हैं, तो आगे फिर आता है कि the sun is a hot plasma, ionized matter, और with inner core temperature exceeding 10⁵ Kelvin and outer at a temperature of 6000 Kelvin. At this temperature, no substance remains in the fluid or the liquid phase. In what range do you expect mass density of the substance to be? In the range of the density of the fluid in the liquid or the gas phase. Check if you give correct from the following data. तो mass of the sun हो जाएगा 2 गुना 10⁻30 kg, रेडियस ऑफ सन हो जाएगा 7 गुना 10⁸ तो मास ऑफ सन हो जाएगा 2 गुना 10⁻30 kg, रेडियस ऑफ सन हो जाएगा 7 गुना 10⁸ मीटर, भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 गुना 7 गुना इतना, तो 1.437.3 गुना 10⁻24 तो आ जाएगा 1.4 गुना 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब. ये हो गया डेंसिटी ऑफ द फन. So the density of the fun is the density of the fluid and the liquid. The high density is attributed to the intense gravitational reaction of the inner layer on the outer layer of the fun. तो यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशंस का है जो एनसीईआरटी कंप्लीट होता है.